Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss expected numerical on the semiconductors. So let's get started. So the numerical is given like this. A semiconductor has the following parameters. Mu n is equals to 7500 centimeter square per volt second. What is mu n? Mu n is the mobility of the electrons, as you know, and mu p is the mobility of the holes, that is given as 300 centimeter square per volt second. Now, it is also given that the Ni, what is Ni? Ni is the intrinsic carrier concentration of the given semiconductor, which is 3.6 into 10 to the power 12 per centimeter cube. So, मुझे ढूंढना क्या है? So, find the minimum conductivity value of the semiconductor. So ये जो सेमीकंडक्टर है, ये वाला सेमीकंडक्टर का मुझे एक मिनिमम कंडक्टिविटी वैल्यू चाहिए फॉर दिस गिवन वैल्यूज. So let us find the minimum conductivity condition. So as we know, the minimum conductivity of an semiconductor, यहाँ पे जो semiconductor given है, in this semiconductor, in the question they have not told you that whether it is an intrinsic semiconductor or it is an extrinsic semiconductor. So by default you will take it as an intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor के लिए मेरा देखिए यहाँ पे ये डेटा given है mu n, mu p and ni. You have to find the minimum conductivity value of this equation, of this numerical. So minimum conductivity का जो relation होता है, we know the relation like this, that sigma, where sigma is the conductivity. So minimum conductivity is equals to 2q ni value root over of mu n into mu p. So this is the relation of the conductivity minimum. अब आपको ये डाउट हो सकता है कि सर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहां से आया? So what will be the process of finding the minimum conductivity equation? So let us first derive that, क्योंकि ये डेरिवेशंस आपको एग्जाम के टाइम काम आ सकता है. So let us find what is minimum. ये वाला इक्वेशन कहां से आया? So for that purpose we will start from this equation, that we know that the conductivity, which is sigma, this sigma is denoted as you know, a general relation, that is n q mu n plus p q mu p. ये n क्या है? N is the electron concentration inside the semiconductor. ये P क्या है? The whole concentration in the semiconductor. Q क्या होंगे? That is the electronic charge. That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And mu P and mu N are the mobilities of the holes and electrons respectively. So ये equation आपका well known equation है. So in this equation, another equation is there also, a well known equation, that is the mass action law equation. So mass action law equation क्या होता है कि the electron concentration n is equals to the whole concentration p is equals to ni square, that is intrinsic carrier concentration square. So from this we can find the value of the whole concentration p as ni square divided by n. So ये जो equation आया यहाँ पे, ये मेरा होल कंसंट्रेशन का इक्वेशन है with respect to the electron concentration. So now I will take this value and put this here. So यहाँ पे जो p value है, इस p value के अंदर ये वाला value put कर देंगे. So for that what will be the equation? तो यहाँ पे n cube mu n था पहले से, अब ये वाले p value कहाँ होंगे? ये वाला value होगा. So that is ni square divided by n into q into mu p. यहाँ पे आएगा. सिमिलरली मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि यहाँ पे मेरा n है, यहाँ पे q होगा, यहाँ पे mu n है. अब इसको मैं लिख रहा हूं 1 by n into ni square into q into mu p. तो ये वाला इक्वेशन आया. अब मेरा काम क्या है कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम कंडक्टिविटी. सो मिनिमम कंडक्टिविटी यहाँ पे पूछा गया था कि मिनिमम कंडक्टिविटी मतलब मेरा सिग्मा जो है, ये सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है. सो दिस सिग्मा शुड बी मिनिमम. अब कोई वेरिएबल मिनिमम कब होता है? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव
0 होता है. So that means the sigma will be minimum. Sigma will be minimum when the d sigma by dn will be equals to 0 from maximum minimum. So minimum कब होगा जब first derivative 0. That's why d sigma by dn is equals to 0. So now let us find d sigma by dn from this equation. ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से मैं d sigma by dn का वैल्यू निकालूंगा. So let us do the derivative. So d sigma by dn क्या होंगे, यहाँ पे n है, so it will be q into mu n only. यहाँ पे क्या है 1 by n. तो इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, इट विल कम आउट टू बी 1 by n स्क्वायर. यहाँ पे क्या था ni स्क्वायर, यहाँ पे था mu p. So this will be the first derivative. So this first derivative should be 0. So that means यहाँ पे 0 आ जाएंगे. So that is q into mu n minus 1 by n square into ni square into q into mu p. So if I take this term here on the left hand side, I can write the equation as 1 by n square into ni square into q into mu p is equals to q into mu n. ये वाला इक्वेशन है. So from this equation you can see I can cut out this q को मैं कट आउट कर सकता हूं. तो मेरा n का वैल्यू क्या आएगा? What will be the value of n? So from this equation I can find the value of n. So the n value जो आपका आएंगे, यहाँ पे n स्क्वायर है तो mu p या mu n आपका नीचे आ जाएंगे. So n वैल्यू जो आपका आएगा तो यहाँ पे तो n स्क्वायर है, so that means यहाँ पे एक रूट ओवर आएंगे. So रूट ओवर के अंदर वो क्या होगा mu p by mu n. So mu p by mu n आएंगे और उसके साथ आपका यहाँ पे क्या है ni स्क्वायर. So this ni स्क्वायर यहाँ पे ये तो n स्क्वायर था तो ये सिर्फ हो जाएंगे ny. So in this way I can find the value of the electron concentration when the conductivity is minimum. तो मेरा जो सेमीकंडक्टर है वो वाला जो सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर, इस सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जब मिनिमम होंगे तब मेरा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये वाला होगा. तो मैंने निकाल दिया. So this is the electron concentration of the semiconductor when the conductivity is minimum. अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से मुझे होल कंसंट्रेशन निकालने होंगे जब मेरा कंडक्टिविटी मिनिमम होगा. तो कहां से निकालूंगा, ये मेरा मास एक्शन लॉ है. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ n हियर and I will find the value of whole concentration when the conductivity is minimum. So that means P will be equals to ni square divided by this n, and I will put the value of n, this n value here. So I will get the value of whole concentration. तो ये वाला वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा. क्या है ni, तो यहाँ पे है ni, यहाँ पे है रूट ओवर क्या है mu p by mu n. So mu p by mu n. So from this value I can find the value of p. तो p का वैल्यू क्या आएगा, p वैल्यू आपका आएगा ये वाला ni, इसके साथ काट आउट हो जाएंगे तो ऊपर में एक ni वैल्यू आएंगे और इसको मैं लिख सकता हूं रूट ओवर mu n by mu p. So this is the value of the whole concentration inside the semiconductor when the conductivity value will be minimum. So this is the electron concentration and this is the whole concentration when the conductivity value is minimum. So I have got the value of n and p. So now I want to find the minimum conductivity value. So minimum conductivity value क्या होंगे, ये जो मेरा इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन, इसमें मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो n वैल्यू है, ये जो p वैल्यू है, इसमें मैं अगर ये दोनों वैल्यू बिठा दूंगा, पुट करेंगे तो मेरा कंडक्टिविटी मिनिमम हो जाएगा. क्योंकि ये जो दो वैल्यू है n और p का, ये कब हो रहा था मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए. So in this equation we will put the value of n and we will put the value of p and we will get the sigma minimum. तो sigma minimum क्या होगा, sigma minimum I can write the sigma minimum as n पे मैं ये वाला वैल्यू बिठाऊंगा. So that means यहाँ पे क्या है ni, तो यहाँ पे मैं बिठाऊंगा ni रूट ओवर ऑफ mu p divided by mu n. यहाँ पे उसके साथ q और mu n है तो उसके साथ मेरा q और mu n प्लस यहाँ पे p वैल्यू है
p वैल्यू कहां से आएगा, ये वाले वैल्यू से। सो यहां पे है ni रूट ओवर म्यू n बाय म्यू p। सो म्यू n बाय म्यू p उसके साथ q into म्यू p। सो q into म्यू p। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सिग्मा मिनिमम। अब ये जो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे ni है, यहां पे q है, यहां पे ni है, यहां पे q है। सो आई कैन टेक आउट द ni into q कॉमन। सो इफ आई टेक ni into q कॉमन तो इसके अंदर क्या आएंगे, रूट ओवर म्यू p डिवाइडेड बाय म्यू n into म्यू n, ये वाला आएगा। सो अब यहां पे क्या आएंगे, म्यू n डिवाइडेड बाय म्यू p रूट ओवर into म्यू p। तो ये वाला इक्वेशन आएंगे। फर्दर सिंपलीफिकेशन अगर होगा तो यहां पे रूट ओवर म्यू n, यहां पे म्यू n। सो दैट मींस वी कैन राइट ni into q, यहां पे क्या होगा, रूट ओवर म्यू p into म्यू n, यहां पे क्या होंगे, म्यू n into म्यू p। सो दो हो गया। सो दैट मींस फाइनली मेरा जो वैल्यू आया सिग्मा मिनिमम का, दैट इज इक्वल्स टू 2 into ni into q रूट ओवर ऑफ म्यू p और म्यू n। ये वाला इक्वेशन मैंने पहले लिखा था, देखिए यहां पे सेम इक्वेशन मैंने डिराइव किया। सो दिस डेरिवेशन विल बी समवॉट हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन। सो देखिए सिग्मा मिनिमम का वैल्यू आ गया। अब मुझे वैल्यू निकालना है तो ni का वैल्यू गिवन है, ni वैल्यू कहां पे है, दिस इज द ni वैल्यू। अब मेरा म्यू p का वैल्यू कहां पे है, म्यू p वैल्यू इज दिस वन, म्यू n वैल्यू कहां पे है, ये मेरा म्यू n का वैल्यू। जस्ट पुट द वैल्यूज। सो इफ आई पुट द वैल्यूज देन इट विल कम आउट टू बी, यहां पे 2 ni का वैल्यू कितना है, 3.6 into 10 to the power 12। अब q का वैल्यू क्या होता है, q is nothing but the electronic constant। so electronic charge constant that is 1.6 into 10 to the power minus 19। इसके साथ मेरा म्यू p वैल्यू आएंगे, म्यू p वैल्यू इज 300। सो यहां पे 300 और म्यू n वैल्यू इज 7500। so 7500। so this will be the value। so if you calculate this value you will get the value of the sigma minimum। तो सिग्मा मिनिमम का जो वैल्यू आपके पास आएंगे दैट विल बी 17280 into 10 to the power minus 7 Siemens per centimeter। so this is the value of the sigma minimum of the given numerical। so in this way we can calculate the value of the sigma minimum for this given numerical। hopefully you have understood this numerical and you have enjoyed the numerical। thank you for watching the video।